So guys, the next step is your qualification. After talking about your family, you will talk about your qualification. So guys, if you are a school student, you can talk about your qualification in these ways. Suppose you are in 10th class. You can say I am in class. I am in class 10. You will say I am in class 10th. You will not say I am in class 10th. You will not say I am in class 10th. Yes, you can say I study in 10th standard. Right? Or if you are a graduate or you have completed your graduation, यदि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी आपने कोर्स कवर कर लिया है, जैसे सपोज आपने बीटेक कर लिया है, बीएससी कर लिया है, तो आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड बीटेक, आई हैव कंप्लीटेड बीएससी इन, ऐसा बोल सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन कंप्यूटर साइंस, इन व्हाटएवर. Or you can say I am graduate. You can say I am BTech, BSc, PhD in. Suppose you are BTech in electronics, so you can say I am BTech in electronics. You can say I am BTech in electronics. Or after completing your schooling, if you are doing your graduation, it means you are doing your higher education, you can say I am pursuing, यहाँ पर आ जाएगा आपकी कोर्स का नाम, I am pursuing. Suppose if you are pursuing BTech, you can say I am pursuing BTech from. अब यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम बता सकते हैं या कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम. सपोज आप RGPV से BTech कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं I am pursuing BTech from RGPV University. So guys, in this way you can talk about your qualification. The next step is your skills and experience, or we can say strength. So if you have completed your graduation, suppose you are going for an interview and you just recently completed your graduation, then you will be a fresher. So you can say I am a fresher. You are a fresher, it means you don't have any experience. You can say I have 6 month experience in. Suppose किसी चीज में यदि आपका एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं I have 6 month experience in. Suppose आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग में तो आप बोल सकते हैं I have 6 month experience in teaching. It may be anything. Suppose if you have experience, if you are an employee and you are working in a company, so you can say I have 5 years experience working with. यहाँ पर आ जाएगा आपकी कंपनी का नाम और एज की बात आ जाएगा, एज यहाँ पर आ जाएगा आपका डेजिग्नेशन. सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, सपोज आप एक TCS में काम कर रहे हैं, एक कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एंड आपकी जो पोस्ट है वहां पर डेजिग्नेशन है वो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव 5 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद TCS एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. Like this. Or if you have any extra achievements or experience, you can say I have done 2 years course in web development, computer application, or whatever it is. Or you can say if you are talking about your strength, you can say I am quite good at. Suppose if you are good at programming, you can say I am quite good at programming. Or you can say I am quite good at public speaking. Here it's up to you that
in what you are good. So guys, this was the sixth step of your introduction, and let's move on to the next step. So guys, the next step is hobby. After talking about your experience, you will have to talk about your hobbies. It means आपका किस चीज में शौक है. You can say my hobby is. My hobby is. Suppose आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो आप बोल सकते हैं my hobby is playing cricket. My hobby is के बाद आप जेरेड यूज करेंगे, यहां पर जेरेड यूज करेंगे. सपोज आपकी हॉबी है म्यूजिक सुनना, तो आप बोल सकते हैं माय हॉबी इज listening to music. Guys, please remember, you will not say listening music, you will say listening to music. यदि आपकी हॉबी है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आप बोल सकते हैं माय हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर. रीडिंग न्यूज़पेपर. और whatever your hobby is, you may talk about it in this way. Or you may have multiple hobbies. If you have more than one hobby, you can say my hobbies are. My hobbies are. Suppose आपकी हॉबी है न्यूज़पेपर पढ़ना और कुकिंग दोनों, तो आप बोल सकते हैं my hobbies are reading newspaper and cooking. My hobbies are. अब उसके बाद आपकी एक हॉबी है, दो हॉबी या तीन हॉबी, दो हॉबी या तीन हॉबी या उससे और ज्यादा है, तो आप यहाँ पर आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं my hobbies are reading newspaper, cooking and so on. Guys, you can replace this my hobby is with this sentence, I like or love. I like or love. Suppose आपकी हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट, तो आप बोल सकते हैं I like या I love playing cricket. Hope you have understood. So the next step is aim or goal. If you have any aim or goal in your life that you want to share, you can tell in this way. I want to be an, or whatever you want to be will come here. Suppose आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं या लॉयर बनना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं I want to be a lawyer. या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं I want to be an engineer. And the another way of telling about your aim is the aim of my life is to be. The aim of my life is to be. अब यहाँ जो भी आपका एम है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. सपोज आपका एम है डॉक्टर बनना, तो आप बोल सकते हैं द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर. सो इन दिस वे you will introduce yourself and you will end with
That's all about me. Thanks. You will end with this sentence. That's all about me. Thanks. So guys, I hope that you understood